So, good morning once again, dear friends. Today we shall once again start with our revision, and we will start with revision for the topic 1, that is electric charges and fields. I will take a short revision, not big enough, but I hope that will be beneficial for you. I have made two parts of the revision. One is chapter 1 and other will be second video, that will be chapter 2. Are you getting my point? So everybody will be able to plan their studies. Before starting my lecture, let me check the link if it's ready or not. Hello, hello. Fine. Wait for a. Okay. Fine. So, madam, 1 minute. Here also let me check my. Yes. Hello. 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 Some problem with my voice. Hello. Hello. Wait for a while. Hello. Yes, it is coming. There is no problem. So, it's okay, madam. We will start with our study. So, first of all, we'll start with revision for chapter number 1, that is electric charges and fields. So, moreover, it will be treated as your electrostatic 1. So, in electrostatic, let me first give you the important points which you have to study in detail. These are very important as your exam is concerned. So, first point is charge. Charge. What is meant by charge? Then charging a body. Charging a body. And third one is properties. So first one will be charge. So you have to deal with everything about charge. Then in charging a body, there are three. First is charging by friction. Then conduction, and then induction. Charging by friction, charging by conduction, charging by induction. Last one is the properties. Properties. Number 1, quantization. Number 2, conservation. And number 3, additivity. So these are the properties of charge. These are the methods with which we can charge a body. And charge. In charge, what we'll deal with? SI unit. Then SI unit will be coulomb. So definition of 1 coulomb. So I suggest you
to be ready with your notebook and note down what I am telling you. Definition of 1 coulomb. What is meant by 1 coulomb of a charge? Then positive charge. How we can get positive charge? Then negative charge. How we can get negative charge? So this is about charge. Then you must be knowing microcoulomb. So millicoulomb. Then microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. The relations. Once you know these relations, you will be able to apply them in your exam. That you are knowing that milli 10 raised to minus 6 coulomb, micro minus 3, micro minus 6 coulomb, nano minus 9 coulomb, pico minus 12 coulomb. So that's all. So that is very important. Then you must study electroscope, gold leaf, electroscope. So this year they have added some questions which are of what we can call it as कल उसका नाम बताया था case based. So in that paragraph type, so in paragraph type they may ask you on the electroscope how we can charge by induction conduction. So be ready with that. So this is all about charge and its properties. So quantization Q is equal to NE. This is important. IMP. Problems on that. So the body is charged with say 2 microcoulomb, 3 microcoulomb. Then how many electrons will be transferred from one body to another body like this. Problems may be coming. So these are all the important points about the charge. So I hope you have understood that. Then we'll go further. So till that, just note down these points. So I hope you have understood this. Just let's go for next point. So till now we have discussed about the charge. Now we will go for Coulomb's law. So in Coulomb's law, you have to be ready with force and electric field. So first of all, Coulomb's law will start with electrostatic force. So we will deal with that first, and then we will go for knowing more about the another things. Okay. So wait for a while. Let me clean the board. Then we'll start for studying Coulomb's law. So first of all, Coulomb's law directly it will not come for the exam, but problems will come for the exam. For Coulomb's law, there are many problems, and you are expected to solve the problems, and many types they will come. So in that case, you have to be ready with the types also. So in Coulomb's law, first one, Coulomb's law. So beta, in Coulomb's law, you will be studying the force of attraction or repulsion. So you are knowing that force of attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So K Q1 Q2 upon R square. So this will be the statement. Magnitude of the force. And where K will be 1 by 4 pi epsilon naught. If you want its value, then you are knowing that the value will be 9 into 10 raised to 9. Okay. SI unit of K will be Newton meter square.
per coulomb square, so that you are knowing. So suppose here are two charges, Q1 and Q2, and R is the distance. Then this will be applied. There is no problem. But in vector form, it's quite critical to know about the Coulomb's law. So in vector form, it's very important to know about that, because plus plus, they will repel each other. Minus minus, also they will repel each other. If it is plus minus, they will attract each other. If it is minus plus, then also they will attract each other. So here, basically we have divided the force into two types. This one is repulsion. I will call that to be repulsion. And this one another type, that will be called as the attraction. So depending on that, here your Coulomb's law vector form, the law will change. Law means the formula will change. That will be given. So how to deal with that? That we will study. I'm not going to go in much deep of that, but I know that I started with your dipole and all cos theorem. So till that I have not taught you. You already got the knowledge and came. So I think it's my duty to explain you that. Afterwards we'll go fast. So suppose if I will give you the Cartesian coordinate system, then first of all, Vida, if I will be taking two charges. This is one charge and this is another charge. Suppose this is Q1 and this is Q2. Then first of all, Vida, you have to come up with the position vectors. So first of all, let me draw the position vectors. And this one is second position. So I may call this to be R1 vector and this to be R2 vector. So R1, R2 are the position vector of two charges. Okay. Now we will join them. And now in this case, suppose case 1, एक case आपको बताता हूँ. If it is repulsive, अगर ये repulsive है, तो मतलब क्या होगा? ये और ये, इसको ये रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा फोर्स, और इसको ये रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा फोर्स. यहाँ पे फोर्स अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे अगर दिखाना है, सपोज, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिया, ये 2 लिया, तो ये आएगा F on 1 by 2 और ये आएगा F on 2 by 1. So that's very important. So what I will do, I will run this all and we will go with vector form of the Coulomb's law. Okay, I hope you have understood that. If it is not, then I will suggest you to note this down and take the screenshot. Okay, go back and take the screenshot. There is no problem. Of course, we will not be dealing in much detail of that, but still, I hope you will be having very much helpful this lecture, because ये तो बेटा पूरा conceptual है और एकदम important है. Once you will be dealing with this type of problems, then you will be having that lot of confidence to solve the problems, and that's why I'm trying, struggling my level best to give you the best. Okay. So we will go. So first, I will show you case 1 repulsive. और attractive आप करना. Repulsive आपको दिखाता हूँ क्या कैसे आता है, वो देखते हैं. तो repulsive आपको अगर देखना है फोर्स, तो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ. This is my coordinate system. This is x and this is y. तो यहाँ पे मैंने दो चार्ज लिया, एक यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे. This is Q1 and this is Q2. Okay, getting my point. So दोनों भी
repulsive. So like charges repel each other, that you are knowing. And unlike charges, hello, there's some problem. Unlike charges attract each other, that you must know. If plus plus minus minus, they will repel. And if plus minus minus plus, whatever, they will attract each other. Now this is the line joining 1 and 2. So I'll call this to be 1 and this to be 2. So just as I told you before, just before I told you that, you now wait. This will be R1, vector R1. This will be vector R2. So first of all, we have to know the terminologies. So first is F12. This is on 1 by 2. Or F21 will be on 2 by 1. It may be attractive, repulsive. इसको देखने का ज्यादा टफ नहीं है. On 1 by 2, on 2 by 1. तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा फोर्स, वो हम देखेंगे. We'll go for understanding that also. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये दोनों भी रिपेल करते एक दूसरे को, this will become my F12. So 2 will repel 1 and this will be F21 on 2 by 1. तो लिखना कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है. F12 कैसे लिखेंगे, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R. अभी 1 को 2 इस डायरेक्शन में फोर्स करना है, मतलब 2 to 1. तो यहाँ पे ये 1 2 है, यहाँ पे लिखोगे आप R21 square into R21 cap. So this is very important. बाकी कुछ नहीं इसमें सीखने के. This is very important. और अगर आप जाओगे दूसरा on 2 by 1 तो वो उल्टा जाएगा, वो ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा from 1 to 2. उसके लिए क्या लिखोगे बेटा आप, F21 sorry F21 will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square. क्योंकि 2 1 मतलब on 2 by 1, 1 उसको पुश कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा into sorry R12 cap, where these caps are unit vectors along the line joint. अब ये R12 R21 कैसे निकालना है वो आपको दिखा. I hope you understood that, and already I think sir has taught you that. Still I think it's my duty to explain you. So this is my R1, this is my R2. Now what you have to do, you have to know the triangle law of vector addition or parallelogram law, whatever. So if I will be taking like this is 1 and this is 2, then it will become a R12. तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मैं लिखूंगा R1 वेक्टर R1 प्लस R12 will be R2. तो R12 कितना बन जाएगा मेरा, R12 will be R2 minus R1. I hope you have understood that. तो ये कब करेंगे, मैंने ग्रेविटी में भी आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर को. तो ये कब करते हैं आप, जब आपको R12 निकालना है. तो R12 किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ के. अगर इफ वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 कब जाएंगे, जब 1 2 को रिपेल करेंगे, मतलब वो किसके फोर्स के लिए यूज करेंगे, 2 1 on 2 by 1 रिपल्सिव है इसलिए. ये एक बार समझ में नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम. अभी दूसरा देखते हैं. पोजीशन वेक्टर तो चेंज नहीं हो पाएगा, ये ऐसे रहेगा, है ना. ये मेरा बन जाएगा R1, ये बन जाएगा R2. अभी जाते हैं 2 to 1. तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर 1 2 और अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर ये. तो क्या मैं लिख सकता हूँ R2 और इसका नाम क्या लिखोगे, 2 to 1. सो R21, R2 plus R21 will be R1
So of course, what will be my R21? It will be R1 minus R2. So I hope you have understood that. Observe it carefully. It will be a lot of essential for you people. So I will suggest you to note this down. If you are not noted down, already if you are noted down, then go through your notebook करके देखो इसको. अभी कुछ नहीं है बेटा, इसमें एक फंडा है. अभी ये रिपल्सिव की जगह अगर मैंने इसको अगर अट्रैक्टिव करना है, मैंने इसको क्या करना है, अट्रैक्टिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे खाली चेंज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं अट्रैक्टिव. अभी अगर ये अट्रैक्टिव बनता है तो ये मेरा डायग्राम चेंज हो जाएगा. तो ये डायग्राम में चेंज करता हूँ, ये वैसे ही रखता हूँ. हाँ, सो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना. डायग्राम चेंज मतलब वही डायग्राम, लेकिन आपके लिए फिर से मैं बना के दिखाऊं. और इतना ही मैं आपके लिए डायरेक्टली बताने वाला हूँ, बाकी सब चीजें आपको मैं ऑलरेडी बताया हूँ, तो आपको वो करना पड़ेगा डायरेक्टली. तो आज के लेक्चर में मोस्टली आपका पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का थोड़ा सा पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑलरेडी वीडियो मैंने किया है आज स्कूल में, आज मतलब आज से पहले ही किया है. तो आई एम ट्राइंग दैट यू ऑल विल बी ऑन द सेम नोट. जो बच्चे डायरेक्टली गाइडेंस ले रहे हैं और जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं, उनके लिए कुछ बीच में दूरी नहीं रहे. That's why I'm trying, and you will get that idea. And most of the times, I will be doing that so that you all will be on the same note. तो फिर से बनाते हैं सेम डायग्राम. खाली अभी इसको क्या करने का, अट्रैक्टिव करने का. ये 1 ये 2, इसको बोलता हूँ Q1, इसको बोलता हूँ Q2. और ये लाइन ज्वाइन किया मैं. हाँ, इसको बोला मैं X, इसको बोला Y, इसको बोला क्या R1, इसको बोला R2. तो यहाँ पे भी दो हो सकते हैं, फ्रॉम 1 to 2 एंड फ्रॉम 2 to 1. तो ये फोर्स कैसे दिखा, अगर अट्रैक्टिव है तो 1 को 2 अट्रैक्ट करेगा, तो कैसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे करेगा, लॉन्ग दिस लाइन करेगा, है ना. और 2 को अगर 1 अट्रैक्ट करना चाहता है, देन इट विल बी अट्रैक्टिंग अलोंग दिस वे. सो ट्राई टू गेट व्हाट आई मीन टू से. तो यहाँ पे बन जाएगा F12 on 1 by 2, F21 on 2 by 1. Only the difference will be that this will be attractive. तो अगर ये attractive है तो कैसे लिखेंगे, F12 on 1 by 2, on 1 by 2 कहाँ पे जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है. तो यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 to 2. यहाँ पे आएगा R12 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू R12 कैप. तो ये जो डिफरेंस है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ. पहले जो हमने रिपल्सिव दिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे F12 है तो यहाँ पे R21 आ रहा है, लेकिन अभी अट्रैक्टिव है, इसकी वजह से ये 12 है, ये भी R12 है. तो ब्लाइंडली किसी भी फॉर्मूला को रिसाइट मत करो. समझ में आ रहा है बेटा, अपन को किसी भी फॉर्मूला को ब्लाइंडली रिसाइट नहीं करना. क्यों नहीं करने का है, रिसाइट किया तो आपको मतलब वो रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, व्हाट इज दैट, ये आपको समझ नहीं पाओ. लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान से देखा और ये फॉर्मूला क्रिएट किया, तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू गेट द फॉर्मूला. नथिंग स्पेशल, नो नीड टू डू एनी स्पेशल एफर्ट्स फॉर दैट, है ना. सो दैट यू कैन डायरेक्टली डू. वैसे ही आपका आएगा F21. F21 बेटा कैसे बनेगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन, अभी 2 1 on 2 by 1, 2 को 1 अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कहाँ पे आएगा, 2 to 1 आएगा, ऐसा डायरेक्शन है. तो यहाँ पे भी R21 आएगा स्क्वायर इनटू R21 कैप. तो सिनेरियो नहीं चेंज होता, ये भी नहीं चेंज होता. आपको एक चीज है, क्या क्या ध्यान रखना है, F12 that is on 1 by 2, F21 that is on 2 by 1. Direction
डिपेंड रहेगा whether it is attractive or whether it is repulsive. समझ गए बेटा? दूसरा R12 that is from 1 to 2 लिखेंगे कैसा? R2 minus R1 और R21 मानो 2 to 1 लेकिन लिखेंगे कैसा? R1 minus R2. So this one, this one, this one, this one, and prior one also. These 4 points are very important as your electrostatics is concerned. This is all about Coulombs. So I will not go in much detail about that. Everybody knows that. इसके आगे मैंने सब चीज आपको पढ़ाया है. तो I will suggest you to be ready with these types. इसके बाद में क्या क्या आता है? इसके बाद में बहुत टाइप आते हैं आपको. इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कैसे करना है, क्या करना है, तो आपको मालूम है इक्विलिब्रियम के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं. मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या है? एफ नेट विल बी 0. तो इक्विलिब्रियम है अगर, तो एफ नेट को आपने 0 करना है. वंस यू मेक एफ नेट 0 देन योर हाफ वर्क विल बी डन. देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ का रिवीजन. ओके, इसके बाद एक थोड़ा टाइम के लिए मैं आपका बाकी के पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ. तो अभी बाकी यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देने वाला हूँ. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करने का है? नंबर 1 IMP लिखो इसको. प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ. तो इसमें क्या है? नंबर 1 इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम. इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? नंबर 1 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, then ट्रायंगल, स्क्वायर, बहुत सारे आते हैं. तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं दिखाने वाला, खाली आपको ऐसे आते हैं ना, यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मुझे प्लस चार्ज इनके बीच में रखना है. तो बीच में रखना है, यहाँ पे ये रखना है या यहाँ पे रखना है. कहाँ पे रखे? तो सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम. तो इसका आपको केस स्टडी करके रखना. दूसरा वो पूछते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देते हैं. ओके, और सपोज इसके सेंट्रॉइड पे मैंने ये रखा है, चार्ज रखा है, और यहाँ पे कोई चार्ज है. हाँ, तो यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी +1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी +1 माइक्रोकूलम. अभी यहाँ पे एक रखना है चार्ज x, नहीं तो q चार्ज रखना है. तो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ q? तो इसका साइड वगैरह दे देंगे आपको, साइड a सपोज. तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एफ नेट जो है आपको बनाना पड़ेगा 0, तो ही बनेगा आपका इक्विलिब्रियम. I suggest you to try to solve the problems on that. If you do have any doubts, any query regarding to this, you may directly ask, personally ask. There is no problem. Okay. So that was all about the Coulomb's law. तो इसका मैं क्या प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आपको पूछना है. ओके, अगर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का लिया सेशन तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी वो मैं लाइव करूंगा. लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड तो एटलीस्ट करूंगा ही करूंगा. अगर मैंने स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिया तो मेरे साथ लैपटॉप होता है. मैंने आज मैडम से परमिशन लिया है एंड आई विल बी गोइंग फॉर रिकॉर्डिंग दैट. उसका एक झलक आपको आज मिलेगा. टॉपिक नंबर 2 का मैंने ऑलरेडी स्कूल में रिकॉर्ड किया है, तो वो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो. इधर उधर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते है ना बेटा. ठीक है. सेकंड चीज एक ही मैं बताने वाला हूँ और बाद में रुक जाने वाले, दूसरा वीडियो आने वाले उसमें देखो. तो सेकंड में क्या है, आपको एरिया वेक्टर मालूम होना चाहिए. एरिया वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लक्स देखेंगे. क्या देखेंगे? हम फ्लक्स देखेंगे. सो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ,
ये अगर एरिया है, ये प्लेन है, तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये बन गया उसका एरिया वेक्टर। तो अगर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, एकदम फटाफट आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है। तो सपोज ये मैंने चार्ज, इसको बोला मैं क्यू, तो इसका फील्ड लाइंस बनेगा ऐसा, रेडियली आउटवर्ड इफ इट इज प्लस, और अगर वो माइनस है तो रेडियली इनवर्ड। तो ये क्यों होता है, ये आपको सर ने भी बताया होगा, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ। द रीजन इज दैट इफ यू विल पुट अ टेस्ट चार्ज दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इसलिए इट इज रेडियली आउटवर्ड। और ये जो निगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना अगर है, अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो आई कैन ड्रॉ द फील्ड लाइन लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका फ्लक्स जो होता है फाई, वो लिखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया, डी ए और ए लिख सकते हो। तो ये आएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर ये मैंने उल्टा सीधा इधर उधर किया तो उनके बीच में जो एंगल रहता है वो सबको लेके अगर आपने देखा तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इस फ्लक्स के ऊपर ही अपना जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो उसको बोलते हैं हम गॉस थ्योरम। तो अभी गॉस थ्योरम में पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको, खाली उसका इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, 2 मार्क के 1 मार्क के, नहीं तो एक्सप्लेनेटरी आता है थोड़ा सा फ्लक्स निकालने के लिए वगैरह। तो आपके पास नोट डाउन करके रखो कि यू हैव टू रीड something related with flux and you have to try to practice on the problems dealing with flux. So उसको मत भूलो, फ्लक्स के ऊपर जो जो प्रॉब्लम आएंगे उनका प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्राई करो। आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो लास्टली मैं आपको गॉस थ्योरम का ये बताने वाला हूँ स्टेटमेंट, और उसके क्या क्या एप्लीकेशन आपको करने हैं वो दिखाने वाला। तो पहले गॉस थ्योरम में मैं अभी स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिखा था आपको, डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू enclosed upon epsilon. So total flux through the closed surface will be equal to total charge enclosed divided by the permittivity of the medium. तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये इधर उधर कैसे लिख देते हैं, ये ऐसे भी लिखता हूँ। फाई टोटल को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए और डी एस कुछ भी लिख सकते हैं, और उसको इक्वेट करो क्यू ए एन सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो इसको लेके आपको 3 पॉइंट आएगा। एक आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज dq by dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ा आज का लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और एक लेक्चर आने वाला है। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा dq by dA, और तीसरा आने वाला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो dq by dV। तो ये सरफेस और ये वॉल्यूम, तो इसको लेके आपको you have to go with different applications of Gauss theorem. Only keep in mind hollow and solid shape, शेल जो आपका है शेल, तो शेल आपके सिलेबस से कट किया है इस टॉपिक से। तो whatever is the cut syllabus from this is शेल, शेल आपको अभी नहीं। तो आपको क्या क्या करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर एक करना है, दूसरा प्लेनर शीट करना है। ओके, इतना ही करना है। और स्फीयर में रेगुलर स्फीयर ले लो, शेल मत ले, इनसाइड आउटसाइड
शेर का नहीं है. So I hope you have understood that and be ready for the next lecture. In next lecture, I will be explaining you about the electrostatic potential. Potential कैसे निकालते हैं इतना ही बताया. तो ये सब चीजों का आप आज स्टडी करो. If you are in doubt, feel free to ask me. उस लेक्चर में मैंने बाकी कुछ बताया नहीं है तो इस लेक्चर में वो भी बता के लेता हूँ. एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है एक बार और बाद में ओवरलुक करना है. जो सिलेबस कट किया उसको पेंसिल से कट करो. दूसरा इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करके दिया है वो आपको करना है. और जो अनसॉल्व है आफ्टर द टॉपिक exercise and additional problems. This is the homework for you people. अभी तक नहीं किया है तो आपको अभी करना पड़ेगा. नहीं किया तो एग्जाम में भुगतना पड़ेगा. Because I am not there. I will not be there for your exam. For your exam you have to write. I will not be helping you there. I will help right now. At that time I will not be helpful to you. So that's why I would suggest you to nicely prepare for your this topic and best of luck for next topic. Just within few minutes next video will also come. Already I have uploaded them. Okay, thanks a lot. Thank you. Bye bye. Ready for the next video.